Hello guys. Now we will discuss about the thyristors. A thyristor is basically semi-control diode, and the semi-control is the on control. It's the on control. It's not off control. So it is a four-layer semiconductor device of alternating P and N material. We will see this structure in the coming slides. The word thyristor is coined from thyratron and transistor. There are two states, on and off, so it will be used as a switch. Its other name is silicon control rectifier, and its trade name of thyristors commercialized by General Electric in 1957. Four-layered three-terminal device, anode, cathode and gate, have the highest power handling capability, rating of 1200 volts / 1500 ampere. Its switching frequency ranges from 1 kHz to 20 kHz. There are four states in it: reverse blocking mode, reverse conduction mode, forward blocking mode and forward conduction mode. So the alternately N or P type material, so there are P and PN. There are three junctions J1, J2 and J3, and the layers are PN, PN. So these can be also thought as the combination of PNP and NPN transistors. Okay. So three important thyristor specifications are forward breakover voltage VBR. This is the voltage at which the LASCR enters the forward conduction region. So this is the forward breakover voltage. Okay, if you apply the volt on the anode cathode and you increase the voltage without triggering it, so this is the limit at which it becomes conducting. Okay, holding current, this is the value of the anode current below which the LASCR switches from the forward conduction region to the forward blocking region. This is the minimum current which a thyristor needs to maintain. This is the holding current. So we will see in future that there are basically two currents, like the latching current and the holding current. Latching current is the minimum current which is required to latch the your thyristor to make it on, and if it gets on, this current you can reduce it, and the minimum limit which the current must be maintained through the thyristor in order to keep it conducting is the holding current. And the third one is the gate trigger current, IGT. This is the value of the gate current necessary to switch the LASCR from the forward blocking region to the forward conduction region under specified conditions. When the anode is at positive terminal VAK with respect to the cathode with no voltage applied at the gate, junctions J1 and J3 are forward biased, while the junction J2 is reverse biased. As the J2 is reverse biased, no conduction takes place. So this is referring to these junctions when A is positive, K is negative, J1 and J3 are forward biased and J2 is reverse biased. So now if VAK is increased beyond the breakdown voltage of the thyristor, avalanche breakdown of J2 takes place and the thyristor starts conducting. If a positive potential Vg is applied at the gate terminal with respect to the cathode, the breakdown of the junction J2 occurs at lower value of the VAK. So by selecting an appropriate value of Vg, the thyristor can be switched into the on state suddenly. So this is the IV curve. On the x-axis is the V anode to cathode voltage, and y-axis is the thyristor current. Okay, the anode to cathode current. So we see that if we do not apply the gate current, if Ig is 0, then the voltage we have to apply the VBO in order to make it conducting. Okay, and it starts then conduction, and the minimum value of the current is IL at which it will start conduction, and if it starts conducting, then this value of the IL can be reduced, and it can be reduced up to the holding current. Okay, so this is the IV curve of a thyristor. And an ideal switch behaves like a diode, and there are three states of the ideal switch: forward blocking, forward conduction and reverse blocking. Gate signal switches on the thyristor. So we can see that this is the ideal switch. If we apply the voltage, we get the current from here, the ideal current
the maximum current we can get from it. And similarly, if we apply the negative voltage, anode is negative with respect to the cathode, it becomes in the off state. This is the reverse blocking, that the negative voltage is being applied. This is reverse blocking, and this is the forward blocking region here, that if we don't apply the gate here, then even if we apply the positive anode at the positive and cathode at the negative, then it will not conduct. Okay, it will conduct only when Ig is applied. This is the forward blocking region. Okay, and in the center is the on state. This is known as the forward conduction state. So this is for the thyristor. The types of thyristor are the unidirectional thyristor, bidirectional thyristor. Unidirectional thyristor, the thyristors which conduct in forward direction only, are known as the unidirectional thyristors. SCR, silicon controlled rectifier. LASCR, if we replace the gate terminal with a light window, from which if we apply the light, if we use the light for the triggering, like a phototransistor, so it is named as light activated SCR. Light activated SCR, in which we will apply light instead of the gate. Okay, but it is a rectifier. It is a unidirectional device. Bidirectional thyristor, like a trike. Okay, the thyristors which can conduct in forward as well as in the reverse direction are known as bidirectional thyristor, like trike, triode, AC switch. We will study it further. Triggering devices, these are the triggering devices like UJTs, the devices which generate a control signal to switch the device from non-conducting to conducting state are known as triggering devices, like dike, diode, AC switch, dike, and UJT, unijunction transistor, silicon unilateral switch, SUS, and SBS, silicon bilateral switches. These are the triggering devices basically. Static characteristics: blocking when reverse bias, no matter if there is gate current or not. Blocking when the reverse, if it's reverse bias, it's blocking. Conducting only when forward biased and there is triggering current applied to the gate. Okay, once triggered on, it will be latched on conducting even when the gate current is no longer applied. So if it is on, you don't need the gate. Now the gate is irrelevant. Okay, it's relevant only when it is blocking in the forward direction. Turn off: if you want to turn it off, you have to make it through the circuit. You have to reduce the current from below the holding current. You have to make your anode current, the load current, below the holding current, then it will get turned off. So turning off: decreasing the current to near zero with the effect of external power circuit. If VAK is further increased to a large value, the reverse biasing junction will break down due to avalanche effect, resulting in a large current through the device. The voltage at which the phenomenon occurs is called the forward breakdown voltage. So this is the forward breakdown voltage, means this is the maximum voltage which you will need to apply at the anode cathode terminals without gate signal. So this is the maximum limit. But if you have the gate signal, you can make your thyristor on below that value. Latching current, very important term. After the SCR has switched on, there is a minimum current required to sustain the conduction even if the gate current is removed. Okay, this current is called the latching current associated with the turn on, and it is usually greater than the holding current. Holding current after an SCR has been switched on to the on state to a certain minimum value of the anode current is required to maintain the thyristor in the on state. If the anode current is reduced below the critical holding current value, the thyristor cannot maintain the current through it and it turns off. So this is a very important diagram in which it becomes very much clear about the thyristor, that you have a VBO which is for the IG0, no gate, and then it becomes conducting. And if you have some IG1, IG2, IG3, you can then make it on at V1, V2, V3. Okay, so IG3, we assume that here IG3 is greater than IG2 is greater than IG1. So therefore V1 will be greater than V2 will be greater than V3. Greater the gate current, lesser will be the anode to cathode voltage. So you can trigger it less voltage if you apply more gate current. Okay,
And the two anode currents are latching current and holding current, which are very much important. From this diagram you can see you want the IL to make it on, and if it is on you can reduce that current up to IH. Below IH it will turn off again. Okay, so 4 modes in thyristor operation: reverse blocking mode, reverse blocking mode. It is the thyristor open circuit if anode cathode voltage is negative. Reverse conduction mode, that you apply so much negative voltage that it becomes breakdown in the reverse direction. Forward blocking mode, if anode voltage is at positive potential than cathode voltage, but you have no gate, you have not triggered it, then it is known as forward blocking mode. Okay, but if you trigger it, it becomes in the forward conduction mode. Okay, so thyristor closed circuit. Okay, so this is a circuit. You can see that here anode, gate, cathode and gate. This is the thyristor symbol, and thyristor circuit diagram. We have a potentiometer here, plus and negative terminal across the battery, and this is the output from the center point. It is the load, then it is connected, and then there comes the thyristor, and we can switch the thyristor on and off through the switch S. If we do not press S, then the thyristor remains in the off state. It is known as the forward blocking mode. Okay, but if I press the S button, then a current pulse IGT will flow from the battery ES into the gate terminal, and it will fire your thyristor, and this will complete the circuit from the terminal of center terminal of the potentio to the ground. Okay, so the load will turn on. So in order to turn on the load, you will need to press the switch S. Okay, reverse blocking mode, VAK is negative when the negative voltage is applied to the anode with respect to the cathode. The junctions J1 and J3 are reverse biased, but the junction J2 is forward biased. The LASCR in its reverse blocking state, that is, it acts as an open switch. As shown in figure, a small amount of reverse leakage current flows through the device. Reverse conducting mode, when the reverse conductor voltage is further increased at the reverse breakdown voltage, avalanche breakdown occurs at the junction J1 and J3. LASCR acts as a closed switch in the reverse direction. A large current gives more losses in LASCR, dissipating in the form of heat and thereby damaging the LASCR. Forward blocking, when EAK is positive but VG is 0. Okay, there is no gate triggering. When a positive voltage is applied to the anode with respect to the cathode, the junctions J1, J3 are forward biased. The junction J1, J3 are forward biased. J2 is reverse biased. The LASCR is in the forward blocking state. At this time, the gate signal is not applied. A depletion layer is formed in the junction J2 and no current flows from anode to cathode. As shown in the VA characteristic, a small amount of current called the forward leakage current flows through the device. Because it's in a practical switch, we have a leakage current in the off state. Okay. Forward conduction mode, when VAK is positive and VG is also positive. When the small amount of positive voltage is applied to the gate terminal, while the positive voltage is applied to the anode with respect to cathode, the junction J3 becomes forward biased. So the LASCR acts as a closed switch and conducts a large value of forward current with small voltage drop. With the application of gate signal, the LASCR changes from forward blocking state to the forward conducting state. It is known as latching. Without gate signal, the LASCR changes from forward blocking state to the forward conducting state at the forward breakdown voltage. But this is the maximum breakdown voltage. We usually want to avoid it. Okay, and we apply the gate signal. When the gate signal value is further increased, the latching happens at low VAK voltage as mentioned in the figure. In the presence of forward current, that is after the thyristor is turned on by suitable gate voltage, it will not turn off even after the gate voltage has been removed. The thyristor will only turn off when the forward current drops below the holding current. So if you want to turn off the thyristor, you will need to reduce the main current below the holding current. So this is the diagram we already discussed about the VI characteristics on the left, and on the right we also discussed it separately earlier with different gate currents, and with different gate currents, greater the gate current, lesser will be the anode to cathode voltage in order to make it on.
Okay, this is the two diode model. बंदा नहीं है, फंडिंग का मेरे पास है, आ जाए। तो कहने का मकसद ये कि बंदा नहीं है, स्किल की कमी है, तो इसको थोड़ा सा जहन बनाएं, डेली इसको टाइम दें, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा, और अपनी टीचिंग में जो भी आप पढ़ाते हैं उसमें भी ग्रिप करें, अच्छे टीचर बने। कहते हैं कि बी गुड वन, जो भी है, आप हैं दर्जी हैं, आप ड्राइवर हैं, जो भी हैं, लेकिन बी गुड वन। कुक है यार, एक अच्छा कुक जो है ना वो भी बड़े पैसे लेता है, 5 स्टार होटल, वो अपना होटल खोल ले अगर, तो वो बैठा बैठा पैसे कमाएगा फैसलाबाद में। हजारा होटल की दाल कितनी मशहूर हुई, क्या दाल है, देख लें आप। कहने का मकसद वही है कि चीज फिर होनी चाहिए, मजा आए। चलिए हम वापस आते हैं, रिज्यूम करना है इसको, यहां से करना है। An equivalent circuit of a PNP and NPN transistor. This is the two-transistor model. And when forward biased, if there is sufficient leakage current in the upper PNP device, it acts as base to the lower NPN. The lower NPN then conducts, bringing both the transistors into the saturation. So it's basically this is the PNP, okay, and this is its PNP, okay. This is the base, it is connected to the collector here, and its collector is basically the base of the Q2. So if we apply the gate current, basically if we apply the gate current here, then what happens, the IB2 current flows, it switches on, which makes the conducting IB1, due to which the anode current starts flowing here. So this is how the forward bias, when forward bias, if there is sufficient leakage current in the upper PNP device, it acts as a base to the lower NPN. The lower NPN then conducts, breaking both the transistors into the saturation mode. So this is basically the two transistor model of your thyristor. So thyristor turn on methods, temperature triggering, light triggering, forward voltage triggering, dV by dt triggering, and gate triggering. That you can trigger your thyristor through various means. First one is the temperature triggering. We will discuss step by step here. This is known as the thermal triggering. The width of the depletion layer of the SCR decreases with the increase in junction temperature. So if therefore in SCR, when VAK is very near to its breakdown voltage, the device is triggered by increasing the junction temperature. By increasing the junction temperature, the reverse bias junction collapses, thus the device starts to conduct. This type of turn on may cause thermal runaway and is usually avoided. The increase in the temperature is within the specified value, otherwise it may burn the device. The other one is the light triggering. For the light triggered SCRs, that is LASCR, light activated SCRs, we discussed earlier, a special terminal is made inside the inner P layer of the gate terminal. When the light is allowed to strike this terminal, free charge carriers are generated. When the intensity of the light becomes more than a normal value, the thyristor starts conducting. These types of SCRs are called LASCR. Energy is imparted by light radiation. Electron hole pairs are generated, increasing the number of charge carriers. This leads to the instantaneous flow of current, and thyristor triggering should have high dV by dt. Okay. Forward voltage triggering. In this mode, an additional forward voltage is applied between the anode and cathode. When the anode terminal is positive with respect to the cathode terminal, junction J1 and J3 is forward biased and junction J2 is reverse biased. No current flows due to the depletion rate in the J2 and it is reverse biased. As VAK is further increased at a voltage VBO, which is the limit of the forward voltage, the junction J2 undergoes avalanche breakdown and so current flows and the device turns on. Even the gate is open or if you don't apply the gate. Okay, this type of turn on is destructive and should be avoided. This should be avoided because you are damaging your device basically because of the very high voltage, since you don't have any gate voltage. It is better to apply a gate voltage, then you can turn it on safely at a voltage very much less than this limit. dV by dt triggering, if you give a sudden jerk of voltage, then it will turn on. Okay, with the forward voltage across the anode and cathode,
the outer junctions J1 and J2 are forward biased, but J2 is reverse biased. So you can think of it as of a capacitor. It's basically a capacitor. J2 behaves like a capacitor due to sudden charges existing across the junction. So if IC is equal to C into dV by dt, if the rate of the rise of the voltage is high, charging current would be more, acting as the gate current and triggering on the thyristor. So if there is a surge of voltage in the power circuit, then the thyristor can turn on false triggering. This is known as a false triggering. Therefore, when the rate of the change of the voltage across the device becomes large, the device may turn on even if the voltage across the device is small. The steady state voltage is small, but there comes a sudden spike of the voltage which will turn it on. So this must be avoided. The other one is gate triggering, which is the normal method. Positive signal is applied at the gate terminal. By this, the thyristor can be triggered much before the breakover voltage is reached. Conduction period can be controlled by varying the gate signal. Signal is applied between the gate and cathode. When a positive voltage is applied at the gate terminal, charge carriers are injected in the inner P layer, thereby reducing the depletion layer thickness. As the applied voltage increases, the carrier injection increases. Therefore, the voltage at which forward breakover occurs decreases. So this is the thyristor circuit. We have discussed this in much detail. The thyristors are high-speed solid-state devices which can be used to control the motors, heaters and lamps. We said previously that in order to get the thyristor turn on, we need to inject a small trigger pulse of current into the gate terminal when the thyristor is in its forward direction, that is the anode is positive with respect to the cathode, for regenerative latching to occur. Generally, the trigger pulse need only a few microseconds in duration, but the longer the gate pulse is applied, faster the internal avalanche breakdown occurs and faster the turn on time of the thyristor. But the maximum gate current must not be exceeded. Once triggered and fully conducting, the voltage drop across a thyristor anode to cathode is reasonably constant at about 1 volt for all values of anode current up to its rated value. But remember, though, that once a thyristor starts to conduct, it continues to conduct even with no gate signal until the anode current decreases below the device's holding current. यानी आपका holding current से नीचे अगर आ गया फिर इसने बंद हो जाना है. And below this value it automatically turns off. Then, unlike bipolar transistors and FET thyristors, it cannot be used for amplification or control switching. Thyristors are semiconductor devices that are specifically designed for use in high power switching applications and do not have the ability of an amplifier. ठीक है, जैसे जो ट्रांजिस्टर्स भी थे उनको हमने अब स्विचिंग मोड में यूज करना है, हमने कट ऑफ या सैचुरेशन, उनको हमने एम्पलीफाई मोड में यूज नहीं करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. तो thyristors can operate only in a switching mode, acting like either an open or closed switch. Once triggered into conduction by its gate terminal, a thyristor will remain conducting, passing current always. Therefore, in DC circuits and some highly inductive AC circuits, the current has to be artificially reduced by a separate switch or turn off. अब DC thyristor देखें, AC में तो ये नेचुरली ऑफ हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, लेकिन DC में आप क्या करेंगे? तो अब हम देखें, इसमें हमें इसको कहते हैं कम्यूटेशन, थैरिस्टर को बंद करवाना, कम्यूटेशन. When connected to a direct current DC supply, the thyristor can be used as a DC switch to control larger DC currents, and those when using the thyristor as a switch, it behaves like an electronic latch because once activated, it remains in the on state until manually reset. Consider the DC thyristor circuit below. अब ये DC का सर्किट है thyristor का. इसमें देखें दो स्विच है, एक ऑफ स्विच जो S2 है वो नॉर्मली क्लोज है, क्या है वो नॉर्मली क्लोज, और एक स्विच है S1 वो है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन है. अच्छा, अब इसमें देखें कि VDC है, फिर S2 है जो कि मेन स्विच है, और ये ज़रा मोटा यानी बड़ी टर्मिनल वाला स्विच है जिसमें से हाई करंट पास कर सकता है, उसके साथ लोड लगा हुआ है, फिर आपका SCR आता है. ये है पावर सर्किट मेन. अब कंट्रोल सर्किट कैसे लगा हुआ है? थ्रू S1 यानी S1 एक छोटा स्विच है, इसकी रेटिंग भी कम है और साथ में एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है. जब आप S1 को प्रेस करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अकर करेगा
अक्रॉस आर जी के जो 1 किलो ओम की है, उस वोल्टेज से क्या करेगा कि आई जी करंट की पल्स जाएगी गेट के अंदर और थायरिस्टर आपका फायर हो जाएगा। यानी आपका जो सर्किट है इस वक्त S2 क्या है नॉर्मली क्लोज, S1 क्या है नॉर्मली ओपन। अगर आप S1 को प्रेस करेंगे तो लोड चलेगा, नहीं करेंगे तो ये लोड नहीं चलना, मतलब ये सर्किट लगा हुआ है लेकिन लोड नहीं चलेगा। जब आपने S1 को प्रेस किया तो इसने चल जाना लोड ने। अब जब चल गया लोड तो बंद कैसे होगा, इशू ये है इसके बंद करने का। तो उसके लिए आपको S2 जो है उससे ये बंद होगा। अब S2 को जब आप प्रेस करेंगे तो करंट आपका जो होल्डिंग करंट है उससे कम हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये तरीका है कि S1 से इसने ऑन होना है और S2 से इसने ऑफ होना है। तो S1 इसका ऑन स्विच है और S2 इसका ऑफ स्विच है। और लेकिन ये इतना अच्छा सर्किट नहीं है क्योंकि इसमें आपको S2 बड़ी रेटिंग का लगाना पड़ेगा, मेन स्विच आपको हैवी लगाना पड़ेगा। So this is a simple on-off thyristor firing circuit. It uses a thyristor as a switch to control a lamp, but it could also be used as an on-off control switch for a motor, heater or some other such DC load. The thyristor is forward biased and it is triggered into the conduction by briefly closing the normally open on push button S1 which connects the gate terminal to the supply via the gate resistance, thus allowing current to flow into the gate. If the value of the RG is set too high with respect to the supply voltage, the thyristor may not trigger. अगर ज़्यादा RG रख देंगे तो शायद वो इतनी ज़्यादा वो ट्रिगर ही ना हो, ट्रिगर ही ना कर पाए, तो आपको बड़ी प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा जो करंट IG को इससे फ्लो करवाए। ठीक है, once the circuit has been turned on, it self latches and stays on even when the push button is released. अब एक बार मतलब आपने उसको पुश करना है S1 को तो चल गया, अब बंद करने की मतलब चल जाएगा, अब मतलब ट्रिगर हो गया। अब S1 का काम खत्म है, अब ये चल रहा है, इसको अब बंद करना है तो आपको S2 को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल ऑपरेशन ऑफ द पुश बटन S1 विल हैव नो इफेक्ट ऑन द, अब S1 एक बार चला दिया, अब उसको दबाते रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर वो लैच हो गया फिर कोई इफेक्ट नहीं। द गेट लूजेस ऑल कंट्रोल, द थायरिस्टर इज नाउ टर्न फुली ऑन conducting allowing full load current to the flow through the device in the forward direction and back to the battery supply. One of the main advantages of using a thyristor as a switch in a DC circuit is that it has very high current gain. The thyristor is current operated device because a small gate current can control a much larger anode current. The gate cathode resistance is generally included to reduce the gate's sensitivity and increase its dV by dt capability, thus preventing false triggering of the device. As the thyristor has self-latched into the on state, the circuit can only be reset by interrupting the power supply and reducing the anode current to below the thyristor minimum holding current value. Opening the normally closed off push button S2 breaks the circuit, reducing the circuit current flowing through the thyristor to 0, thus forcing it to turn off until the application of another gate signal. However, one of the disadvantages of this DC circuit design is that mechanical normally off switch S2 needs to be big enough to handle the circuit power flowing through both the thyristor and the lamp when the contacts are opened. If this is the case, we could just replace the thyristor with a large mechanical switch. One way to overcome this problem and reduce the need for the large more robust off switch is to connect the switch in parallel with the thyristor. तो इतना बड़ा स्विच, महंगा स्विच आपने जो लगाना है, एक और इसका तरीका भी होता है, ये देखिए, जिसमें उसने क्या किया कि एक स्विच उसने लगा दिया थायरिस्टर के एनोड से ग्राउंड के दरमियान। अब आपने S1 को प्रेस किया तो ये चल जाएगा, फिर जैसे आप S2 को प्रेस करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो करंट थायरिस्टर में से फ्लो हो रहा होगा ना, देखिए करंट बैटरी से निकला लोड के बाद जब आपने इसको ऑफ कर दिया तो करंट ने अब स्विच के थ्रू पास कर जाना है और जो करंट थायरिस्टर में से फ्लो हो रहा था वो अब होल्डिंग से कम हो जाएगा, क्योंकि करंट को तो लेस रेजिस्टेंस पास चाहिए, एनोड टू कैथोड की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो वो करंट इधर से चला जाएगा, तो इसमें करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक जरा इंटेलिजेंट, एक जरा चालाक तरीका, अच्छा तरीका है कि आप इधर इतना बड़ा मेन स्विच लगाने के बजाय यहाँ पे एक छोटी रेटिंग का स्विच लगा के भी इसको बंद करवा सकते हैं, और इसको हम कहेंगे फोर्स्ड कम्यूटेशन। ये है फोर्स्ड कम्यूटेशन, क्योंकि आप फोर्सफुली इसको बंद करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे एसी सप्लाई होती
तो वो थी नेचुरली कम्यूटेट हो जाना था, इसने सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करना था, उसके बाद इसने बंद हो जाना था, नेचुरल कम्यूटेशन, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइकिल में कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, एनोड नेगेटिव हो जाता है. Hence the thyristor switch receives the required terminal voltage gate pulse as before, but the larger normally closed switch of the previous circuit has been replaced by a smaller normally open switch in parallel with the thyristor. Activation of the switch S2 momentarily applies a short circuit between the thyristor anode and cathode, stopping the device from conducting by reducing the holding current to below its minimum value. अच्छा, अब एसी का थायरिस्टर सर्किट हम देख लेते हैं. ये एसी का थायरिस्टर सर्किट है. इसमें आप देखें, जैसे आप इसको S1 को ऑन करेंगे तो इसमें पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये रेक्टिफाई कर देगा इसको, मतलब आगे सप्लाई देगा और ट्रिगर कर देगा इसको. तो ये जो SCR होगा ना, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करेगा और नेगेटिव साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी आधी वेव इसकी ज़ाया हो जाएगी. तो पॉजिटिव साइकिल में एनोड कैथोड से पॉजिटिव होगा और यहाँ से ये जो सर्किट है यहाँ से इसको गेट की पल्स भी मिल जाएगी. ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में ये ओपन हो जाएगा. When connected to an AC supply, the thyristor behaves differently from the previous DC connected circuit. This is because AC power reverses polarity periodically, and therefore any thyristor used in an AC circuit will automatically be reversed by causing it to turn off during one half of each cycle. Okay, the above thyristor firing circuit is similar to the design of DC SCR circuit, except for the emission of additional off switch and the inclusion of the diode D1, which prevents reverse bias being applied to the gate. During positive cycle of the sinusoidal waveform, the device is forward biased, but the switch S1 is open. Zero current is applied to the thyristor and it remains off. On the negative half cycle, the device is reverse biased and will remain off regardless of the condition of the switch S1. If switch S1 is closed, जब आप S1 को close करेंगे at the beginning of each positive half cycle, the thyristor is fully off, but shortly after which there will be sufficient positive trigger voltage and therefore current present to the gate to turn the thyristor and lamp on. यानी अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो उससे ये यहाँ पे पल्स इसको मिल जाएगी, जिससे ये आपका पॉजिटिव साइकिल में ऑन हो जाएगा. The thyristor is now latched on for the duration of positive half cycle and will automatically turn off again when the positive half cycle ends and the anode current falls below the holding current value. During the next half cycle, the device is fully off anyway until the following positive half cycle, when the current process repeats itself and the thyristor conducts again as long as the switch is closed. Then in this condition, the lamp will receive only half of the available power from the AC source, as the thyristor acts like a rectifying diode and conducts current only during the positive half cycle. When it is forward biased, the thyristor continues to supply half power to the lamp until the switch is opened. If it were possible to rapidly turn switch S1 on and off so that the thyristor receives its gate signal at the peak 90-degree point of each half cycle, the device would only conduct for one half of a positive cycle. In other words, conduction would take place during one half of the sine wave, and this conduction would cause the lamp to receive 1/4 or quarter of the power. अब ये क्या बात कर रहा है, देखिए अगर इसको आप 90 डिग्री पे करवाते हैं ऑन, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो पहले क्या हो रहा है कि पहले ये एक पूरी वेव का हाफ दे रहा है, आधी वेव तो जाया हो रही ना नीचे वाली, ये आधी वेव यानी पूरी वेव का पहले हाफ दे रहा है. अब आप अगर इसको 90 पे करवाते हैं तो फिर ये जो आधी वेव है उसका भी हाफ है. ठीक है, तो हाफ ऑफ हाफ क्या होगा, पूरी वेव का क्वार्टर. ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि क्वार्टर पावर आगे देख रहा है. क्यों, पहले ही हाफ दे रहा था उसको, फिर आपने 90 पे जब जाके करवा रहे हैं आप उसको ट्रिगरिंग, अगर 0 पे नहीं करवा रहे 90 पे करा रहे हैं तो उसका हाफ है, जो आधी का हाफ है. तो इस तरह से क्या बन गया आपका 1/4 हो गया. ये देखें यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, देखिए ये 1/4 है ना पूरी वेव का, ये वाला पोर्शन है, सिर्फ 1/4 हिस्सा है. तो बट एक्यूरेटली वेरिंग द टाइमिंग रिलेशनशिप ऑफ द गेट पल्स एंड द पॉजिटिव हाफ साइकिल, द थायरिस्टर कुड बी मेड टू सप्लाई एनी परसेंटेज ऑफ पावर डिजायर टू द लोड. आप इसको किसी में 0, अब देखें 50% पावर हम दे सकते हैं, क्योंकि 50 तो ज़ाया हो रही है ना इस केस में, इस सर्किट के अंदर. तो उस 50%, अब उसको हम 0 to 100% चेंज कर सकते हैं, उस 50% को बेसिकली, यानी उस अब हमारे कंट्रोल में क्या है 0 से लेके 50%. ठीक है, तो
between 0 and 50%. Obviously, using the circuit configuration, it cannot supply more than 50% power to the lamp because it cannot conduct during the negative cycle when it is reverse biased. ठीक है, अब ये देखिए जैसे ये हाफ वेव फेज कंट्रोल है, इसके अंदर ये वेव अपने अप्लाई की हुई है, S1 है, फिर R है और साथ कैपेसिटर है, ये डिमर का एक सर्किट है बेसिकली ना। तो इसमें आप इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके इस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इस रेजिस्टेंस से, वेरिएबल रेजिस्टेंस से आप ये जो इसका ट्रिगर एंगल है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन अगर आप इसको बहुत बढ़ा दें R1 को तो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा, तो ये जब जरा देर बाद चार्ज होगा तो ये देर बाद इसको पल्स देगा कंडक्शन की। तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, बेसिकली आप अपना ट्रिगर एंगल बढ़ा रहे हैं, और अगर आप अपना ट्रिगर एंगल बढ़ा रहे हैं, आप अपनी पावर जो डिलीवर कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। एंगल अगर बढ़ रहा है 0 से लेके 180 तक है ना आपके पास, अगर वो बढ़ रहा है एंगल आपका 90 आप कर दिया तो पावर 1/4 होगी। अगर आपने कर दिया एंगल और 100 कर दिया, 100 एंगल, तो थोड़ी पावर होगी। यानी एंगल बढ़ा रहे हैं तो पावर जो डिलीवर है वो कम हो रही है। ये चीज को आपको पता ना, और अगर आप एंगल कम कर रहे हैं तो ज्यादा पावर डिलीवर हो रही है। तो ये इसमें एक रिलेशन है इनवर्स। तो फेज कंट्रोल, इसको हम कहते हैं फेज कंट्रोल। फेज साइन वेव के अंदर घुस जाते हैं और उसका फेज कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फेज कंट्रोल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थायरिस्टर एसी पावर कंट्रोल एंड बेसिक के आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें एक होता है ऑन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम साइन वेव के अंदर नहीं घुसते। एक पूरे साइकिल की बात करें, जैसे एक साइकिल ऑन एक साइकिल ऑफ, तो ये होता है 50% पावर आप देंगे ना। एक साइकिल ऑन 3 साइकिल ऑफ 25%, 3 साइकिल ऑन 1 साइकिल ऑफ 75%, ठीक है। दूसरा क्या कंट्रोल होता है कि हम वेव के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, जिसको आप फेज एंगल कंट्रोल कहेंगे। ये भी हम सारा आगे बड़ी डिटेल में इसको करेंगे। And a basic AC phase control circuit can be constructed as shown above. Here the thyristor gate voltage is derived from the RC charging circuit via the trigger diode D1. During the positive half cycle, when the thyristor is forward biased, capacitor C charges up by the resistance R1 following the AC supply. The gate is activated only when the voltage at point A has risen enough to cause the trigger diode D1 to conduct and the capacitor discharges into the gate of the thyristor to turn it on. The time duration for the positive half cycle at which the conduction starts is controlled by RC time constant. तो वो जो RC बनेगा उससे आप बेसिकली इसका एंगल कंट्रोल कर रहे होंगे। Increasing the value of R has the effect of delaying the triggering voltage and current supplied to the thyristor gate, which in turn causes a lag in the device conduction time. As a result, the fraction of half cycle over which the device conducts can be controlled between 0 to 180 degree. Which means that average power dissipated by the lamp can be adjusted. However, the thyristor is unidirectional device, so a maximum of 50% power can be supplied during each positive half cycle. There are a variety of ways to achieve 100% full wave control using thyristors. आप लगा दें एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगा दें, मतलब ऑपोजिट लगा दें, तो वो दोनों साइड पे फिर आपकी कंडक्शन करेंगे। One way is to include a single thyristor within a diode bridge rectifier circuit which converts AC to unidirectional current through the thyristor, while the most common method is to use 2 thyristors connected in inverse parallel. A more practical, इसको trike बोलते हैं इसको। A more practical approach is to use the trike, as this device can be triggered in both directions. ट्राइक में क्या होगा कि 2 थायरिस्टर यूं सब मिलेंगे, एंटी पैरेलल होंगे, गेट कॉमन होगा, और फिर उसमें ना क्वाड्रेंट होते हैं ट्राइक के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड। यानी ट्राइक को आप पॉजिटिव पल से भी ऑन कर सकते हैं, उसको नेगेटिव पल से भी ऑन कर सकते हैं। ये उसमें एक जबरदस्त बात होती है, तो वो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। एज दिस डिवाइस कैन बी ट्रिगर्ड इन बोथ डायरेक्शंस, देयरफॉर मेकिंग देम सूटेबल फॉर एसी स्विचिंग एप्लीकेशन। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। द सर्किट शोन इन फिगर E4.1 is initially relaxed. The thyristor is triggered at omega t pi by 6 during the peak value of the current, the conducting time of the thyristor and circuit turn off time. The thyristor का जो turn off time है वो कितना है? 80 माइक्रोसेकंड है। अच्छा, ये एक थायरिस्टर का सर्किट लगा हुआ है 230 वोल्ट, यानी हमारी जो पाकिस्तान की वापटा की सप्लाई हुई है 50 हर्ट्ज है और 20 ओम की रेजिस्टेंस है। कहता है कि द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड एट पाई बाई 6, कितना बनता है ये? 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 30 डिग्री है। डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, द कंडक्शन टाइम ऑफ द थायरिस्टर एंड द सर्किट
टर्न ऑफ टाइम। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? पीक वैल्यू ऑफ करंट इसमें सिंपल आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी इसमें क्या है वो देख लें आप, वी क्या इसमें बनती है, वी है इसमें इसको हम देखें दैट थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई एट ओमेगा टी पाई बाय 6, यानी वो 30 पे जाके ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। द करंट एट द इनिशियल एट दिस इंस्टेंट इज 0, पाई बाय 6 पे करंट कह रहा है कि 0, इनिशियल वैल्यू 0 है। व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन इनटू कंडक्शन द सर्किट इक्वेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी इसमें साइनोसाइडल है ना, तो वो क्या होता है कि v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। वी एम क्या होती है कि जी पीक वैल्यू, तो इसमें 230 आरएमएस है बेसिकली, तो 230 को आप ज़रब देंगे अंडर रूट 2 के साथ, फिर उसको डिवाइड करें 20 के साथ, ठीक है। ये देखें 230 ज़रब अंडर रूट 2 ओवर इसको जो है वो 20 से करें तकसीम, तो ये इसकी पीक वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये पीक वैल्यू इसकी निकल आएगी वी एम ओवर आर, ठीक है। वी एम ओवर आर कितना निकल रहा है 16.26, ये पीक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमारा इस वक्त पूछा क्या हुआ है कि द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड एट दिस, डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ करंट, वो निकाल दी हमने। पीक वैल्यू करंट आ गई, कितनी आ गई 16.26। द कंडक्टिंग टाइम ऑफ द थायरिस्टर, कंडक्टिंग टाइम इसका कितना होगा 180 तक कंडक्ट करेगा ना, तो 180 माइनस 30, क्योंकि 30 से हमने उसको शुरू किया ना, ये इसका कंडक्टिंग टाइम आएगा। तो कितना बनता है 180 180 माइनस 30 150 डिग्री, यानी इसमें पाई है ना, पाई है ना, पाई 180, पाई में से माइनस कर दें पाई बाय 6, उतने टाइम ये कंडक्ट कर रहा है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 ये इसका कंडक्टिंग एंगल आ जाएगा। और आपको पता है कि उसको जो है वो जैसे ओमेगा टी है ना, ये बेसिकली ओमेगा टी थीटा है ना, पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो टी क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 6 ओवर ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या आपका आंसर है 5 ओवर 12 एफ, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 5 ओवर 12 एफ इज 8.33 मिली सेकेंड, ठीक है 8.33 मिली सेकेंड। वैसे 50 हर्ट्ज है तो ये 20 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड होगा, 20 में से 10 मिली सेकेंड आपका पॉजिटिव साइकिल है, 10 मिली सेकेंड आपका नेगेटिव साइकिल है, उस 10 मिली में से 8.33 मिली सेकेंड ये कंडक्ट करेगा, ओके। So the thyristor remains off for the negative half cycle, hence the circuit turn off time is, तो इसका जो turn off time है वो क्या है 2 पाई माइनस पाई ओवर ओमेगा, तो ये तकरीबन आता है आपका 10 मिली सेकेंड। Hence the turn of the thyristor is 80 microseconds. Since the circuit turn off time is greater than the turn off time of thyristor, the device will be commutated. देखें the turn off time of the thyristor is 80 microseconds, यानी 80 माइक्रोसेकंड इसका टर्न ऑफ है, यानी आपका जो सर्किट का टाइम है वो इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये कम्यूटेट कर जाए, बंद हो जाए, ठीक है, इसके जो ऑफ टाइम है। सिंस द सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो कि 10 मिली सेकेंड है ना, आपका जो वापडा की वेव है वो ज़्यादा है 80 माइक्रोसेकंड से, तो ऑब्वियसली थायरिस्टर को टाइम मिल जाएगा सफिशिएंट कि वो बंद हो जाए आराम से, ठीक है। सो द टाइम इज ग्रेटर दैन द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर, द डिवाइस विल बी कम्यूटेटेड। अच्छा, रिपीट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज 10 किलोहर्ट्ज, पहले फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, अब है 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज 50 हो गई तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा आपका, यानी 1 ओवर एफ। तो द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई एट ओमेगा टी पाई बाय 6, द करंट इज 0, करंट उसी तरह 16.26 आएगी जो पहले हमने निकाल दी है, और द करंट बिकम 0 एट पाई, हेंस द कंडक्शन टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज पाई माइनस पाई बाय 6 ओवर ओमेगा, जो कि 41.67 माइक्रोसेकंड है, और ऑफ टाइम आपका तब निकलेगा 50 माइक्रोसेकंड। बेसिकली आप ये जो टाइम पीरियड, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 10 किलोहर्ट्ज, इसका अगर आप निकालें टाइम पीरियड तो वो कितना आपका निकल रहा है, वो आपका निकल रहा है आपका 100 माइक्रोसेकंड, जिसमें से 50 माइक्रोसेकंड वो ऑन है, 50 माइक्रोसेकंड वो ऑफ है, जो साइन वेव आपको गिवन है। अब इसका टर्न ऑफ टाइम है 50 माइक्रोसेकंड और थायरिस्टर का कितना है 80 माइक्रोसेकंड, यानी आपका सर्किट जो है वो 50 माइक्रोसेकंड के लिए उसने होना है, लेकिन थायरिस्टर को तो 80 चाहिए, तो इसका मतलब है कि थायरिस्टर को टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा बंद होने के लिए, कम से कम उसको 80 माइक्रोसेकंड देने पड़ेंगे आपको ताकि वो बंद हो जाए। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में आपका थायरिस्टर बंद नहीं होगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सर्किट है, ये सही सब करनी है डिजाइन।
तो इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट नहीं चलेगा. The turn off time of the thyristor is 80 microseconds. Since the circuit turn off time is less than the turn off time of the thyristor, the device will not be commutated. It will continue to conduct during the next positive half cycle even in the absence of gate triggering. तो ये क्या करेगा, कंडक्शन मोड में ही रहेगा, ये ब्लॉकिंग मोड में जाएगा ही नहीं. ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिवर्स रिकवरी टाइम होता है डायोड्स के अंदर या कोई भी स्विच जो होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक के, और ऑफ टाइम इज नॉर्मली ग्रेटर देन दी ऑन टाइम. और जो स्विच होता है उसको आपने जो ऑफ टाइम है उतना देना है टाइम. अगर आप उसको उतना टाइम नहीं दे रहे उसको यानी आप समझे रेस्ट देना है आपने. अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे, उसको उतना टाइम नहीं दे रहे, वो बंद नहीं होना, वो ऑन ही रहेगा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. जी, the thyristor shown in figure E3.1 has a latching current of 55 milliampere and a holding current of 40 milliampere. यानी इसका जो लैचिंग करंट है वो 55 मिली है और होल्डिंग 40 मिली है. यानी 55 पे ये लैच करेगा और अगर लैच होने के बाद आप इसको 40 मिली तक चला सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सो दैट द डिवाइस इज लैच्ड इनटू द कंडक्शन. क्या ये कंडक्शन में जब जाएगा उसके लिए कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, यानी ज़्यादातर कितनी बड़ी यूज़ करें. While in conduction, if the value of the resistance is varied, what is the minimum value for which the device is turned off? बहुत अच्छा सवाल है. अब इसमें देखें, इसमें जो करंट क्या होगा, करंट होता है जी V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V ओवर आर, तो 220 ओवर आर. ठीक है, ये 220 का वोल्ट है DC का. ठीक है, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर. और अब लैचिंग के लिए करंट क्या होगा, 55 मिली. ठीक है, तो करंट जो है वो 55 मिली से ग्रेटर हो, I ग्रेटर देन 55 मिली, तो I क्या है, V ओवर आर ग्रेटर देन 55 मिली. R को उस तरफ ले जाएं और 55 को नीचे ले आएं, तो 220 ओवर 55 मिली, उससे आपकी रेजिस्टेंस निकल आएगी मैक्सिमम, कि इतनी मैक्सिमम हो सकती है, यानी मैक्सिमम इतनी. उसके बाद इससे कम करेंगे तो ऑब्वियसली वो करंट उससे ज़्यादा ही होगा, तो मैक्सिमम इतनी आप यूज़ कर सकते हैं. तो I क्या ग्रेटर देन 55 मिली, I इक्वल टू 220 ओवर R, तो R इज़ लेस देन 4000 ओहम, यानी 4 किलो ओहम मैक्सिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस की. इससे कम रख सकते हैं आप अगर आपने इसको लैच करवाना है, उसको ऑन करवाना है. सो व्हेन द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड द करंट मस्ट बी ग्रेटर देन द लैचिंग करंट फॉर द डिवाइस टू गेट लैच्ड. सो I इज इक्वल टू 220 ओवर R ग्रेटर देन 55 मिली. तो इसमें देख लें कि आपका R जो है वो लेस देन 4 किलो होना चाहिए. द रेजिस्टेंस इज लेस देन 4 किलो ओम, द डिवाइस विल बी लैच्ड इनटू कंडक्शन. अच्छा, अब कंडक्ट होने के बाद, जब कंडक्ट होना शुरू हो गया, अब आपका जो I है इट मस्ट बी ग्रेटर देन योर 40 मिली. ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 40 मिली. तो अब वहाँ पे 40 मिली रख के कर लें इसको सॉल्व. देखें तो इसमें I जो है, इफ़ द डिवाइस इज लेस देन द होल्डिंग करंट इट इज़ टर्न ऑफ. ठीक है ना, हाँ, ये टर्न ऑफ तब होगा जब आपका करंट 40 मिली से कम हो जाएगा. तो I 220 ओवर R लेस देन 40 मिली, तो वहाँ से R इज़ ग्रेटर देन 5500 ओहम, यानी 5.5 किलो ओहम से अगर आप बढ़ा देंगे अपनी रेजिस्टेंस को, तो करंट इसका आपका 40 मिली से भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बंद हो जाएगा. यानी इसको आपको 4 किलो से कम रखना है रेजिस्टेंस को ऑन करवाने के लिए, और अगर बंद करवाना है तो 5.5 किलो तक कर दें इसको, पोटेंशियोमीटर जो आपका है उसको. तो इफ द रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 5.5 किलो ओम द डिवाइस विल बी टर्न्ड ऑफ. आई बात समझ. इस एग्जांपल से आपका जो लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. अच्छा जी, नेक्स्ट है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर E3.2 द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इसको ट्रिगर कर रहा है. The latching current of the thyristor is 60 मिली. लैचिंग करंट कितना है, 60 मिली, यानी 60 मिली से ज़्यादा अगर करंट होगा फिर इसने कंडक्ट करना है. चेक वेदर द थायरिस्टर इज लैच इनटू कंडक्शन. तो अब निकालें इसको, इसका करंट निकालें. करंट क्या होगा इसका, 230 इंटू √2 साइन ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई उस एंगल पे, डिवाइडेड बाय 5 किलो ओहम, यानी 5K से इसको जो है वो आप कर दें. ये कौन सा सर्किट है, ये वाला सर्किट है, ये देखें ये सर्किट है. इसमें क्या है, 230 इंटू √2 साइन ऑफ 314t. ये आपको पता है कि ओमेगा है 314, आपका 50 हर्ट्ज के लिए होता है ना, 2 पाई f.
2 पाई एफ होता है ये बेसिकली। 2f कितना हो गया 100, उसको 3.14 से ज़रब दें तो 314 आ गया, तो 314 ये वापडा का है, ये जेन में रखें। 230 RMS है, √2 करेंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक फार्मूला उसने साइन वेव का, ये जो फार्मूला है ये आपकी वापडा की जो सप्लाई है उसको शो करता है। 230 √2 इंटू साइन ऑफ 314t डिवाइडेड बाय 5k, ठीक है। अब साइन ऑफ 314t किसके बराबर है, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45, तो यहाँ पे ये चीज़ देखें इसने पुट किया 230 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 5 के, ये आ रहा है 46 मिली, 46 मिली आ रहा है, लेकिन चाहिए कितना आपको 60 मिली, तो ये नहीं होगा आपका थैरिस्टर, आपका ऑन नहीं होगा। 45 डिग्री पे आपका थैरिस्टर ऑन नहीं होगा। सिंस द करंट इज लेस देन द लैचिंग करंट इट इज नॉट टर्न्ड ऑन, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स से आपको जो इसका लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।